दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में मैं मयूर जानी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की बात शुरू करते हैं भाई, है ना। रोजगार को लेकर आखिर वैसे 3 ऐसे मानदंड है जहां पे ये जो बजट सत्र चल रहा है, जो पूरा होने की तैयारी में है, उसमें आखिरकार सरकार ने माना कि विकास के जो 3 मानदंड है उस पर भी आगे कार्यक्रम करेंगे, लेकिन उसमें से एक पर अभी बात कर रहे हैं। रोजगार, युवाओं को रोजगार। तो रोजगार देने के मामले में भले ही जो असल बेरोजगारी है उसको तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी ये तो माना सरकार ने कि रोजगारी जो है उसमें विकास के जो मानदंड के तौर पर जो अब इतने सालों के बाद होनी चाहिए थी रोजगारी, वो नहीं हो पाई है। तो उसको लेकर जो है बहुत सारे, कांग्रेस भी टूट पड़ी है, आम आदमी पार्टी भी टूट पड़ी है। युवराज सिंह जाडेजा जो कि बहुत एक एक बहुत ही एग्रेसिव विद्यार्थी युवा नेता है और पर्चा लिख जितने भी हुए हैं सबको उन्होंने एक्सपोज किया हुआ है। तो उन्होंने पहले तो इस पर क्या कहा है ये हम सुन लेते हैं। उन्होंने कुछ 2 बातें कही हैं, पहली बात सुन लेते हैं। નમસ્કાર, જય હિન્દ, જય ભારત। હું યુવરાજસિંહ જાડેજા આજ રોજ વિધાનસભાના ફ્લોર ઉપર સરકારશ્રી દ્વારા બેરોજગારીના આંકડા રજૂ કરવામાં આવ્યા। જે જોવા જઈએ તો સરકારના જે આંકડાઓ છે એ ઘણી બધી વિસંગતતાઓ ઉત્પન્ન કરી રહ્યા છે। કેમ કે જે આંકડાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે એવું કહી રહ્યા છે કે રાજ્યમાં કુલ 2,83,140 બેરોજગારો છે। એની સાથે જ 2,70,000 જેટલા એ કહી શકાય કે શિક્ષિત બેરોજગારો છે અને 12,218 જેટલા અર્ધશિક્ષિત બેરોજગારો છે। જે આંકડાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે એ આંકડાઓ વિસંગતતા ભર્યા, અસમંજસતા ભર્યા અને એની સાથે સાથે ક્યાંય પણ પારદર્શિતા જાળવતા નથી। અને આજે સરકારે જે વાત રજૂ કરી કે આ જે આંકડાઓ છે એ બેરોજગાર ચોપડે નોંધાયેલા આંકડાઓ છે, તો શું સરકાર એ જે ચોપડે નોંધાયેલા છે એ જ લોકોને શું બેરોજગાર સમજે છે? જે ચોપડે નોંધાયેલા નથી શું એને બેરોજગાર નથી સમજતી? એની સાથે સાથે સરકારે આજે વિધાનસભાના ફ્લોર ઉપર એ વાત સ્પષ્ટ કરી કે રોજગાર કચેરી પાસે સરકારી રોજગારીના કોઈ પણ આંકડાઓ જે છે એ ઉપલબ્ધ નથી, એનું કાર્ય નથી। તો આજે આંકડાઓ જે છે એ કલેક્ટ કરવાનું એ કાર્ય કોનું છે તો તેની પણ સ્પષ્ટતા કરવી ખૂબ જરૂરી છે। અને એની સાથે સાથે માનનીય શ્રી બળવંતસિંહ રાજપૂતે જે વાત કરી કે 5 વર્ષમાં, છેલ્લા 5 વર્ષમાં અમે 1.5 લાખથી વધારે સરકારી રોજગારી આપી, તો ગુજરાતના તમામ યુવાનો એ પણ જાણવા માંગે છે કે આ 1.5 લાખ જે રોજગારી, સરકારી રોજગારીની જે વાત થઈ રહી છે એ કયા કયા ક્ષેત્રોમાં અપાયેલી। અહીંયા સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે કે હાથીના દાંત જે છે ચાવવાના અલગ અને દેખાડવાના અલગ છે। જે રોજગારીની વાત છે એમાં ખાસ કરીને સરકારી રોજગારીની જો વાત હોય તો સામાન્ય એવી 3,000 જગ્યા તલાટી હોય, જુનિયર ક્લાર્ક જેવી જગ્યાઓ હોય, એમાં પણ 32-32 લાખ, 35-35 લાખ જે રોજગાર વાંચુકો છે એ રોજગાર વાંચુકો ફોર્મ ભરે છે। એને કોઈ પણ હિસાબે રોજગારી જોઈએ છે જેથી કરીને એનું પરિવાર ચાલે। ત્યારબાદ રોજગારીના અલગ અલગ માધ્યમો છે, સરકારી રોજગારી, અર્ધ સરકારી રોજગારી કે બિન સરકારી રોજગારી। આજે જે છે માધ્યમો, એ માધ્યમોમાં પણ એ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી કે કેટલા લોકોને સરકારી રોજગારી, કેટલા લોકોને અર્ધ સરકારી રોજગારી કે કેટલા લોકોને છેલ્લા વર્ષોમાં અને છેલ્લા વર્ષમાં એ જે કહી શકાય ખાનગી રોજગારી આપવામાં આવી। સરકારે એ પણ સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ, કેમ કે જ્યારે કોઈ પણ મોટી કંપનીઓ ગુજરાતમાં આવે છે, જ્યારે એમઓયુ સાઇન કરે છે ત્યારે એમને કહેવામાં આવે છે કે 85% જે સ્થાનિક જે લોકો છે ये कह रहे हैं, युवराज सिंह जाडेजा हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार अगर कह रही है कि 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, तो ये कह रहे हैं बताएं तो सही कहां दिया, किस क्षेत्र में दिया, विभागीय तौर पे बता दें कि अच्छा ये बता दें कि सरकारी नौकरी कितनी दी गई। और अगर आप ऐसे निजी क्षेत्र में अगर कोई नौकरी मिलती है तो उसमें कोई सरकार का हाथ नहीं होता है, ना उसकी कोई भूमिका होती है। वहां तो आप जाएं और आप अपनी क्षमता के अनुसार, अगर जो आपका इंटरव्यूअर है या जो जिस संस्था का मैनेजमेंट है उनको लगता है कि अगर आपको नौकरी देना उचित है तो आपको नौकरी दे देता है। तो उसमें तो सरकार का क्या रोल बनता है? तो
तो ये किस तरह से छलावे की बात हो रही, ये युवराज सिंह जाडेजा का कहना अब तक ये जो आपने सुना उसमें ये था कि आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, और इतनी सिर्फ इतनी रोजगारी को भी अगर आप कह रहे हैं कि दे दिया आपने, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब एक और चीज जो उन्होंने आगे की वो भी सुन लेते हैं। એમને કહેવામાં આવે છે કે 85% જે સ્થાનિક જે લોકો છે એ સ્થાનિક લોકોને અહીંયા રોજગારી આપવામાં આવશે, પરંતુ આ જે ક્રાઇટેરિયા છે એનું પણ ક્યાંય આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે પાલન થતું નથી. તો સરકાર જાણી જોઈને સમજી વિચારીને આંકડા છુપાવવાનું ષડયંત્ર કરી રહી છે, કાવતરાઓ કરી રહ્યા છે, અને જે ખરેખર ગુજરાતના યુવાનોનો, ભારતના યુવાનોનો ગંભીર પ્રશ્ન છે કે રોજગારી, એ રોજગારી ઉપર સરકાર ઢાંક પીછોડો કરી રહી છે. અને જ્યારે એની જવાબદારી બને છે, જ્યારે એની જવાબદેહી બને છે, તો પોતાની જવાબદારીને પોતાની જવાબદેહીથી ભાગી રહી છે. તો અમે સ્પષ્ટ કહીએ છીએ કે આની ઉપર એક નિષ્પક્ષ ચર્ચા થાય અને આ જે પણ બાબતો છે બેરોજગારીને લઈને, રોજગારીને લઈને, એની ઉપર ચર્ચા સાથે એના નિરાકરણ ઉપર પણ ધ્યાન આપવામાં આવે. એટલે આ જે બધી બાબતો છે, જે આંકડાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે, એ સંપૂર્ણપણે વિસંગતતાઓ ભર્યા છે, અસમંજસતા ભર્યા છે, અને એની સાથે જ આ જે આંકડાઓ છે એ પારદર્શિતા જાળવતા નથી. જે અપારદર્શિતા છે, બરાબર છે, કહી શકાય કે આની પર બહુ સ્પષ્ટતાની જરૂર છે. તો આશા રાખીએ કે આની પર ઝડપથી સ્પષ્ટતા થાય. જય હિન્દ, જય ભારત. वैसे हम आपको बता दें कि सरकार ने जो विधानसभा में, गुजरात सरकार ने जो विधानसभा में जो बात कबूल की है, वो सबसे उसका महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये है कि जब नरेंद्र भाई हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने ये कहा था कि उस समय बहुत चल रहा था कि बाहर से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो गुजरात में आ रहा है, और उसके बाद फिर ये शर्त रखी जाती थी कि जो भी इंडस्ट्री गुजरात में डालेगा, जिसको क्योंकि बहुत सारी रियायतें दी गई थी ना भाई, बहुत सारी जो है वो कंसेशंस दिए गए थे, बहुत सारे एग्जाम्पशंस दिए गए थे, और बहुत सारी छूट दी गई थी कि आप यहाँ आए, आप यहाँ इंडस्ट्रीज जो है डालें, ताकि हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको अच्छी तरह से रोजगार मिले। तो नियम ये रखा गया था कि 85% जो लोकल यूथ होगा, जो लोकल लोकल आसपास के लोग होंगे, उनको आपको नौकरी देनी होगी। वो हो नहीं पा रहा है कहीं भाई। नरेंद्र भाई ने ये भी कहा था कि आईआईटी की बात तो बाद में, बात तो बहुत दूर की बात है। आईटीआई का उनको उनको काफी उस क्षेत्र में युवाओं को पढ़ने के लिए बहुत उन्होंने प्रोत्साहन दिया था अपने भाषणों में। कहा था कि आपके आसपास इतने सारे उद्योग लगने जा रहे हैं कि फिटर है या मैकेनिकल कोई जॉब हो, या इलेक्ट्रिकल की कोई जॉब हो, इलेक्ट्रिशियन की कोई जॉब हो, या अलग अलग तरह की जो स्किल्स जिसमें आती है, उस तरह की सब जॉब आप वहां पे पढ़िए आईटीआई में, ताकि आपके आसपास जो ये सब उद्योग लगने वाले हैं वो वहां वहीं पे आपको जो है आप ही के घर पे आपको नौकरी मिल जाएगी आसपास में, कहीं दूर जाने की जरूरत क्या है आपको। तो वो जो एक सपना था वो बिल्कुल साकार नहीं हुआ है। और भी मुद्दे हैं इसमें, लेकिन इससे हम फिर आगे एक पूरा कार्यक्रम करने वाले हैं कि क्या वो 3 मानदंड जिसमें सरकार ने माना कि हाँ ये हम अचीव नहीं कर पाए हैं, उस पर बात करेंगे। और एक मैं आपको बता दूं, आज हम विशेष कार्यक्रम करने वाले हैं जो आज रात को आप 9:15 बजे देख पाएंगे। पर वो कार्यक्रम जो है वो ये है कि एक महानुभाव है, डॉक्टर किरण पटेल उनका नाम है, और उन्होंने किस तरह से जम्मू कश्मीर के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को और उनकी सिक्योरिटी में सेंध लगाते हुए प्रधानमंत्री के पीएमओ के एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट, बतौर उस पोस्ट ओहदेधारी के नाते उन्होंने किस तरह से जम्मू कश्मीर में वीवीआईपी एक ट्रीटमेंट ली, घूमे 10-15 दिन। बताया जा रहा है कि एक बार नहीं, इससे पहले भी ये कर चुके हैं, और किस तरह से उन्होंने एक तरह से ठगी की पूरे, और मजाक बना के रख दिया, और सिक्योरिटी में इतनी बड़ी सेंध मारी है कि आपको ये देख के लगेगा कि ये किस तरह की सिक्योरिटी और किस तरह का चेक एंड बैलेंस, और क्या बात, वो भी जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में। वो कार्यक्रम हम जो है वो करने वाले हैं। आप उसको रात को 9:15 बजे देखिएगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ये उसमें बहुत सारी चीजों का पर्दाफाश होगा, हम आपको बता रहे हैं अभी से। तो अभी इस कार्यक्रम में इतना ही है। अभी आप और आगे जो है दूसरे मुद्दों के साथ आपके साथ बिल्कुल प्रस्तुत होते हैं आपके समक्ष। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हम कहते हैं कि कमेंट जरूर किया कीजिए, अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वो भी किया कीजिए। ठीक है, चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।